Hey YouTube, thanks for visiting. In this session, we are going to discuss the best strategy to crack the upcoming CSIR NET exam. And we all know that the upcoming CSIR NET is approximately on 6th to 7th June. Okay, I think it's June. Okay, so in this session or in this lecture, we are going to discuss the best strategy to crack the upcoming CSIR NET mathematics or CSIR NET exam mathematics portion. How can we score from each section, or how can we score from any topic, or the best strategy to crack the CSIR NET exam, the best topic to gain the marks very easily, and all the detailed things in this video. Okay, so let's start. And before starting, I am requesting you to all those who are new in my channel, and if this session is helpful for you, then obviously consider subscribing to my channel and obviously give a like to this session. Okay, so before going to the detailed review of the syllabus, okay, first we have to know what is the exam and what is the importance of the exam. Okay, that is, we need to know the analysis of exams firstly. Okay, because CSIR NET exam is a very important and very big type of exams, you can say. Okay, in the mathematical science paper, we have almost 445 marks paper. Okay, and we just need to qualify, or we need to JRF for a general student. I can say here the approximately 120 marks you need to crack the JRF, that is the Junior Research Fellowship. Okay, so how can we crack, or how can we gain this 120 marks very easily? What topics we should must revision, or what topics we should must read to crack the exam? Okay, so let's try to discuss the things one by one. Okay, so first, before going to the content, see what is the mathematical science exam. So in the mathematical science paper of CSIR NET, we have 440 marks total in total. Okay, from which 283.5 marks comes from only from mathematics sections, and 121.5 marks comes from statistics sections, and general aptitude sections, the 40 marks comes from this section. First we talk about the mathematics student, that is the students who are comes from the background mathematics. Okay, so this section is common section. You can do any questions from any part or any unit. Okay, there is no restriction that you are a mathematics student and you cannot do, or you cannot solve the statistics problem. No, there is nothing, or there is no type such restriction in this exams. Okay, so you can just answer any of the questions, and if you gain the marks to up to the mark, that is the qualifying marks for the JRF exam or for the lecturership exam, then you must get the JRF, you must crack the exam. Okay, so now we are going to detail analysis, that is the marks distribution of the exams. Okay, so first we comes to, there are mainly 4 unit: unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. So these 4 units is specially for the statistics background student, and these 3 units are common for all the students. And you can see also that these 3 units are based on the questions from mathematics, and this 4th section is comes from based on the statistics. That is, these 3 sections, section 1, section 2 and section 3, okay, contains the questions of 283.5 marks. And here we get also B part and C part. That is, the B part is the questions from 3 marks, and C parts are the questions from 4.75 marks. There is no negative marking, and there is negative marking of 2/3 marks for each questions. Okay, so now in the statistics background, here also we get 121.5 marks, in which there is also 2 parts, part B and part C here. Okay, here in statistics portion, total 12 questions comes from part B, that is of 3 marks questions, and here 18 questions are of 4.75 marks each questions. Okay, and here in this mathematics section, in part B, we get total how many marks in 3 marks questions. Here we get 12 plus 8 plus 12, that is 32 questions are of 3 marks, and we get here 18 plus 12 plus 18 plus 12 plus
12, yeah, 18 plus 12 plus 12 are from, sorry, 18, I think 18 plus 12 plus 12 is the questions from the part C, that is from 4.75 marks question paper. Okay, now if we see the marks distribution, now mathematics have two part, or have two part. One is pure mathematics and second one is applied mathematics. Now if we comes for pure mathematics, then the marks distribution or the important topics or the main topics of pure mathematics are, one is real analysis, second one is linear algebra, third one is complex analysis, and fourth one is modern algebra. Now in the real analysis, 60 to 65 marks comes in from just real analysis. Here also you can say the topology part is also included in the real analysis part. From linear algebra, the 50 to 55 marks comes in the CSIR NET exam from linear algebra itself. Okay, from complex analysis, 30 to 35 marks comes, and from modern algebra, that is from abstract algebra, 30 to 35 marks comes itself. Okay, so you can see that the weightage of these four subjects, or the weightage of mainly these two subjects, that is the real analysis and the linear algebra, is the most important or have the more weightage throughout this exam. Okay, so you have to do this 1 and 2, these two topics mainly to gain the marks. Okay, whether you are from pure mathematics background, whether you are from applied mathematics background, and whether if you are from statistics background, you have to do these two topics for gaining your marks in the CSIR NET exam. For statistics background students also, you have to do these two topics mostly, or must. Okay, these two topics must. And complex analysis you can also do for the statistics background student and mathematics background student. These two topics are also compulsory. Okay, these three topics for the mathematics students, these three topics, real analysis, linear algebra and complex analysis, these are the most मतलब मैंडेटरी टॉपिक्स है यहाँ पर, आप लोग सोच सकते हो ऐसे, ठीक है। तो देखो, this four portion contains more than how many marks? 60, 50, 30, 30. So above 150 marks, 150, 60, 50, 110, 110, 140, 170. So 170 marks approximately comes from first two units. So these two are from unit 1. So unit 1 means real analysis and what? Linear algebra, and unit 2 means the complex analysis and modern algebra. You must do this real analysis and linear algebra and complex analysis. This complex analysis topic is very small topic, and here 12 to 15 theorems in the complex analysis in total you have, and you have to do some applications. And if you read these three topics very carefully, then you can gain some marks in the CSIR NET exam. Let us come to the types of question first. In any exam, three types of question comes. One is easy questions, one is moderate type of questions, and third one is hard type of questions. I can say here almost 40 to 45% of questions, if we see, or if you going with at least 40 to 45% questions comes from easy section, moderate section approximately 30% question, and hard section approximately 30% question. Obviously comes because you have seen that CSIR NET exam has a level, okay, so that they can give you the hard questions also in the paper. Okay, so you have to target this portion, easy portion, because we have 445 marks, and 40% of 445 marks means you can definitely crack the exam with a good rank. Okay, so suppose if we take that 120 is the qualifying marks for GRF for the general candidate, this is suppose 120 is the minimum approximately a good marks for qualifying the GRF. If you see the last 2 or 3 papers, then there is some mistakes and other things, so skip that topic. I here take the 120 marks to crack the GRF exam. Okay, so if you take the GRF exam, then if you can score at least 20 marks from real analysis, for those that who says that real analysis is tough for me, at least 20 to 30 marks, 25 you can say, 25 to 30 marks you can obviously score, whether you are good or bad in the real analysis, because this 25 marks
if you see, read the real analysis very carefully, the important topics for real analysis, then you can definitely score at least 25 marks from real analysis. And from linear algebra, you can definitely course above 30 to 35 you have to gain from real analysis, because real analysis is a very linear algebra is a very scoring topic, and you have to perform in linear algebra. Okay, and in complex analysis also you can gain 25 marks or 20 to 25 marks. And from modern algebra, those who are skip modern algebra, you can skip modern algebra. I am not telling you that obviously do the modern algebra, but if you read, then obviously go for field theory. Okay, because here some straightforward questions comes from field theory, just based on the some formulas and from group theory also some direct question formula based comes. So I can take here just 10 marks. Okay, so you have to perform, or you have to do this 25 plus 30 plus 20, 85 to 90 marks you definitely score from this 4 part. Okay, this is at least you can do more than these marks. Okay, you can do more than these marks if you read these topics very carefully. Okay, so you have to read these topics very carefully. Here I must say these two topics, must, linear algebra and complex analysis, these two are very scoring topic. Okay, and also real analysis, the several variable calculus and some other topics we have in real analysis, the topics are very scoring paper. Okay, and modern algebra also some direct questions comes from group theory and direct questions come from field theory also, then you can definitely score these types of questions from these topics. Okay, so I say that you can definitely score from 85 to 90 marks from this pure part. Okay, now if we comes in the applied portion, from ODE, that is ordinary differential equation, you can the exam 20 to 25 marks comes. In partial differential equation 15 to 20 marks comes. From numerical analysis 8 to 10 marks comes. From calculus of variation portion 8 to 13 marks comes. From integral equations 8 to 13 marks. From classical mechanics we get 8 to 10 marks, and this is total unit 3. So that is the unit 3 contains only the applied mathematics. Okay, and unit 1 and unit 2 contains pure mathematics. So don't skip these two units, that is unit 1 and unit 2. You have to focus on unit 1 and unit 2 to improve your marks in the CSIR NET exam. Okay, so for ODE and PDE you can definitely marks, so 80 marks मान के ही चलते हैं हम प्रीवियस सेक्शंस में. ठीक है, देखो आप एक चीज देखो, ये लिस्ट हम लोग यहाँ पे पकड़ रहे हैं. ठीक है, लिस्ट, एंड फ्रॉम दिस सेक्शन ODE, PD, numerical analysis, calculus of variations, integral equation, from these 4 topics I skip these topics, classical mechanics, because these are core applied topics. And you can definitely these syllabuses of ODE and PD and numerical analysis and calculus of variations, integral equations are comparatively smaller than the pure section. So I can say that you must cover these sections. See what happens in the exam hall. You can say that you cannot, it may happen that you cannot solve the questions from real analysis. Okay, you cannot solve the questions from complex analysis, or if you don't able to solve the questions from modern algebra, then the marks which decreased in the exam hall, then that marks you can increase from this section. Understand or not? So you can definitely read these topics also. Okay, so you have to focus in these topics also, because the syllabuses of these topics are competitively less than the pure sections. Okay, because the real analysis has huge syllabus, linear algebra is also have big syllabus, complex analysis थोड़ा competitively कम है syllabus. तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारी टॉपिक्स भी आप लोग कर सकते हो. मतलब ये क्या होगा, देखो आप लोग जब एग्जाम में कोई टॉपिक, मतलब सपोज यू कैन टारगेट 25 मार्क्स फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम रियल एनालिसिस. सपोज यहाँ से कोई मार्क्स छूट गया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोग वो जो मार्क्स छूट जाएगा उस मार्क्स को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से. यही मतलब यहाँ का बात है मेनली. ठीक है, तो ODE एंड PD तो आप लोग कर ही सकते हो, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, एंड इस 2 टॉपिक के लिए आप लोग मेरा चैनल में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. ओके, सो यू कैन watch also this playlist for your help in the exam or for your preference. Okay, and integral equations is also a very easy subject. You can definitely do or gain the marks from
this section. Okay, so from this section total 121.5 marks comes in the exam from applied section. Okay, so you can just target the 40% score, then you can also gain from here approximately 40% means approximately at 45 to 50 marks you can gain. Okay, from this algebra, from this applied portion. Therefore you get here 80, 85 plus 40 if I say, then 120 marks already you get minimum. Okay, नाउ इधर उधर हो सकते हैं कि आप रियल एनालिसिस से कर नहीं सकते हो तो कोई दूसरा टॉपिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लीनियर आप मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस आप छोड़ दोगे तो क्या मतलब आप सोच लोगे कि लीनियर अलजेब्रा में मैं कर दूंगा, तो ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरा मतलब यही कि आप लोग कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सपोज इफ यू टारगेटेड ओनली दिस 3 टॉपिक, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली टारगेट द प्योर मैथमेटिक्स टू क्रैक द एग्जाम्स, which is I think it is not good enough और good strategy। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि आप लोग कोई एक टॉपिक में मतलब क्वेश्चन स्टाफ आ जाएगा तो क्या करोगे, तो दूसरा कोई एक टॉपिक को उस मतलब जो क्वेश्चन स्टाफ आएगा उस मार्क्स को मतलब आप लोगों को सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये करना होगा एग्जाम में। देखो एग्जाम एंड one thing is also important that I here discuss a strategy for you, but you need to make your own strategy to crack your exam, own strategy, because this is the most important thing. I discuss something, you can take also or you can skip this discussions also, but you have to make your own strategy, because own strategy is the best strategy, world's best strategy you can say। देखो आप जो भी सोचोगे आप खुद से सोचो कि कैसे मतलब आप लोगों को जाना है एक मतलब देखो आप लोग यहाँ पे हो एंड आप लोगों को CSIR नेट क्रैक करना पड़ेगा, मतलब आप लोगों को एक लेवल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ से यहाँ तक जाओगे उसका पाथ, सपोज यू कैन डू द कॉम्प्लेक्स, इफ यू डू इन complex integration you have to choose path or you have to provide the paths। Okay, so you have to provide or you have to find your own paths to arrive there, to arrive the goal, so you set a goal here first। Okay, so this is the best strategy to crack the exam and you can definitely crack the exams। Okay, you can do it। Okay, now yeah, if we comes in the statistics background, then from the statistics background here also one 3 topics mainly have, one is mathematical statistics, one is applied statistics, and this is LPP। This LPP section can do the mathematics students also very easily, because 1 or 2 questions comes from LPP and very easy types of questions comes in the exam, which we can, that is the students from mathematics background easily easily can solve। Okay, and one more thing here from applied statistics background, more some students or many of the students target the section Markov chain। So this is also an easy topic, most of the students from the mathematics background target this area, and in this area Markov chain 3 questions generally asked in the exam। Suppose you can say the 13 marks approximately comes in the exam and you can definitely can solve this exam। So if we add this LPP and 13, if we take only 10 marks from here, then definitely what is the sum comes 130 marks already you can gain। Okay, so 130 is more than enough to crack the GRF exam, to gain a good rank in the CSIR NET exam। One also topics remaining, which is the general aptitude section। Okay, so general aptitude section is also very important to crack or to gain the better score or to gain the GRF। Suppose you definitely say that some student say that I don't get GRF just for 1 or 2 marks, so this is very bad situation for a student when these types of situations occur। So for this, to skip these situations, I must say that you do some general aptitude portions also to crack the exams in a better way। Okay, so general aptitude section mainly what will do in the exam, this general aptitude section gives support you to gain some extra marks। Okay, so देखो ये आप लोगों को क्या करेगा, कुछ एक्स्ट्रा गेन करने के लिए मतलब हेल्प करेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मतलब जनरल एप्टीट्यूड भी मतलब हम लोग मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो हम लोग यहाँ से मतलब देखो जो है जनरल एप्टीट्यूड में आता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, मतलब 40 मार्क्स का टोटल एग्जाम क्वेश्चन रहता है, एंड you have to what answer this 15 questions from the general aptitude and you have 20 questions। Okay, so
I can, if we take the least number, then we can definitely score at least 10 marks, 10 to 15 marks तो कर ही सकते हैं from general aptitude section. Okay, so general aptitude sections का जो मेन टॉपिक्स है, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या क्या है. न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर है, सीरीज है, डिस्टेंस डिरेक्शन, दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में. जियोमेट्री में मेंसुरेशन है. ऑल टाइप्स आर द बेसिक, मतलब क्या है, बेसिक जो 10th एंड 10th का जो सिलेबस है वो सब यहाँ पे आते हैं. बेसिक एरिथमेटिक्स आते हैं, मॉनिटरी प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइंडिंग एक्स प्रॉब्लम्स आते हैं, मूविंग लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स आते हैं, एवरेज प्रॉब्लम्स आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन तो एक आते ही आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आते हैं, कैलेंडर प्रॉब्लम आते हैं, क्लॉक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द प्रेफरेबल सिलेबस for the general aptitude section. Okay, so you can cover this questions. You can do just 30 minutes each day. I refer that give 30 minutes each day to do some questions practice or some read some topics on general aptitude. Okay, you have 45 days almost, you can say, if the exams occur in time, then you have 45 to 50 days, and in these 45 to 50 days, if you practice 10 questions each day from general aptitude, then you can definitely perform better in the exam, I must say. Okay, now comes to the most important things. What do you need for your exam or to prepare well for your exam? One is guidance. देखो, आप सेल्फ स्टडी करके ही, मतलब करके भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, एंड आप मतलब कोई कोचिंग लेके भी क्रैक कर सकते हो. कोई देखोगे कि सेल्फ स्टडी करके ही क्रैक कर रहा है, एंड कोई क्या करेगा, कोचिंग लेके भी नहीं कर सकते. तो ऐसा सिचुएशंस ऑकर करते हैं. तो एक गाइडेंस आप लोगों को चाहिए. जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके लिए मैं बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे अवेलेबल है कंटेंट. ठीक है, यूट्यूब मतलब हर कोई आप देखता है, एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए यूट्यूब बहुत मतलब अच्छे खासे कंटेंट अवेलेबल है. तो आप लोग यूट्यूब में ऑब्वियसली देख सकते हो. फॉर मैथमेटिकल साइंस आई कैन डेफिनेटली रेफर 1 or 2 चैनल्स फॉर योर गाइडेंस, सच एज Sunil Bansal sir, obviously first choice. Okay, Sunil Bansal sir from SB Tech Math, and mathematical Pathshala, Manish Gokani sir, mathematical Pathshala. Okay, Manish sir, and some other sirs also very good. बहुत सारे sirs अवेलेबल है. ठीक है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे खासे पढ़ाता है यूट्यूब पर. ठीक है, तो आप लोग मतलब यूट्यूब में सर्च करोगे. एंड वन मोर थिंग इज दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो जस्ट योर फेवरेट एडुकेटर. ये नहीं हो सकता है कि आप लोग सब के सब एडुकेटर को ही मतलब फॉलो कर रहे हो. ठीक है, कोई भी एक एडुकेटर आप चुन लो, एंड वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो एडुकेटर की तरफ. ठीक है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग कोई भी एक एडुकेटर का फॉलो कर सकते हो. ठीक है, नाउ कम्स टू, इफ वी कम्स टू बुक्स. देखो, CSIR अपने आप एक बड़ा एग्जाम है. ठीक है, तो CSIR एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए बुक्स का थोड़ा जरूरत पड़ेगा. सिर्फ नोट पढ़ के CSIR नेट एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि यू हैव टू. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल जितना दिन जा रहा है उतना हाई होते जा रहा है. ठीक है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल. सो फॉर दैट, टू टैकल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल, यू मस्ट रीड सम बुक्स फॉर योर improvement of question solving skill. Okay, so for that you have to read some books. You can choose any one standard books for each topic. For suppose that, for you can choose linear algebra, obviously Swarm series, Swarm's outlines. Okay, and for complex analysis also you can see this Swarm series. For real analysis you can see the books from Malik Arora. You can देख सकते हो आप लोग यहाँ पे. ठीक है, कोई बुक्स यहाँ पे मिल जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए गैलियन देख सकते हो. खन्ना बामरी के एक इंडियन ऑथर भी आते हैं. तो देखो, इंडियन ऑथर हो या मतलब फॉरेन ऑथर हो, तो आप लोग जो बुक आप लोग को खुद अच्छा लगा, मतलब आप इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो बुक आप फॉलो करो. ठीक है, ठीक है. ओडी के लिए एमडी राइसिंगनिया या सिमोन्स के बुक आप लोग रेफर कर सकते हो. पीडी के लिए एमडी राइसिंगनिया या आईएनएन स्नेडन की बुक आप लोग देख सकते हो. न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जैन देख सकते हो. कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए एस गुप्ता या एल्सकॉल देख सकते हो. इंटीग्रल इक्वेशन के लिए मतलब एमडी राइसिंगनिया देख सकते हो. एलपी के लिए मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े हो वो देख सकते हो. रियल एनालिसिस के लिए एसके मापा भी देख सकते हो. ठीक है, तो ये सारे बुक्स अवेलेबल है. एंड
वन मोर थिंग, देखो अब जो है कुछ पब्लिकेशन जो है, कुछ एकेडमी का भी बुक्स अवेलेबल है टू द पॉइंट रिटन CSIR नेट की, जैसे कि इन्फो स्टडी पब्लिकेशन बुक होता है AP सिंह सर का, ठीक है, वो भी देख सकते हो। दीप की भी बुक्स कुछ आते हैं, वो भी आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड जो आते हैं, ठीक है। नोट्स भी अवेलेबल आप देख सकते हो, तो आप मुझसे बेटर जानते हो कि कहाँ से नोट्स आप लोग मतलब अवेलेबल करा सकते हो, ठीक है। नाउ देन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ईच टॉपिक। देखो शॉर्ट नोट्स कहाँ में इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एग्जाम्स में ठीक, एग्जाम्स के ठीक पहले आप लोग का मतलब तुरंत रिवीजन करना है, कोई सपोज टॉपिक्स उठा हुआ है तुरंत रिवीजन करना है, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स उस टाइम में जरूरत पड़ेगी। एंड मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, डोंट टेक एनी अदर शॉर्ट नोट्स, ओके। बिकॉज एक चीज देखो, आप जो सजेशन बनाओगे वही होगा बेस्ट सजेशन फॉर योर एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इन द मेन थिंग टू की द सक्सेस, टू की टू सक्सेस यू कैन सी। देखो डेली आप लोगों को मतलब पढ़ाई करना है, एटलीस्ट 5 आवर्स तो पढ़ाई करना ही करना है, ठीक है। एटलीस्ट 4 to 5 hours you have to read in each day, okay, to practice the exams, and each day you have to practice the questions first, questions, because देखो जो मतलब रिसेंट ईयर की ट्रेंड हो रहा है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस दिन ब दिन मतलब चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर का, डोंट गो एनी प्रैक्टिस सेट और एनी अदर और एनी, सपोज यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग अवेलेबल होगा, बट आई प्रेफर मोस्टली यू डू PYQs। एंड ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन देगा ये तो ये लगेगा, ये तो ये लगेगा, ये तो लगेगा, तो इसका ABC करेक्ट हो गया, ऐसे नहीं प्रीवियस की PYQs करो। आप लोग PYQs कैसे करोगे, देखो एक क्वेश्चन उठाओ एंड उस क्वेश्चन का हर एक मतलब जो है ऑप्शंस होगा, हर एक ऑप्शंस को मतलब ऐसे करो, मतलब सर्जरी कर लो एकदम क्वेश्चंस का, उस क्वेश्चंस का रिगार्डिंग मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे ऑप्शंस में, तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कुछ बहुत स्टेटमेंट या कुछ वर्ड मिसिंग कर दे या ऐड कर दे, तो क्या हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, देन यू कैन डेफिनेटली, ये ऐसे क्या होगा, आप लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल होगा बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो ये जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम। एंड फॉर द आई कैन से for the aptitude portion, one books comes from Christy sir, ठीक है, HRISTY, Christy Varghese, just a second। तो क्रिस्टी वार्गिसी सर का जो बुक आता है एप्टीट्यूड के लिए, वो आप लोग एप्टीट्यूड के लिए देख सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। सर अन अकेडमी का सर है, मतलब खुद का एक बुक भी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्रिस्टी सर का बुक भी, ठीक है। तो जो है यही है, आई थिंक आई ट्राई टू कवर और आई विल कवर ऑल द रिगार्डिंग्स और ऑल द थिंग्स टू क्रैक द CSIR नेट, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक द CSIR नेट, ओके। सो इफ एनी topics I skip, then you can definitely comment me in the comment section below, okay। And obviously if you like this video, then obviously give a like to this session. You can comment me whether this video is good or bad, definitely comment me, because one comment make me motivate to make such videos, okay। So this is the strategy, best strategy you can say to crack the exams। so देखो एग्जाम क्रैक करने के पहले एग्जाम्स को अच्छे से जानना है, ठीक है। एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स में घुस जाना है, पूरा के पूरा एग्जाम्स का मतलब एक सर्जरी कर लेना है एग्जाम्स में, कहां से आप लोग गेन कर सकते हो मार्क्स इजीली। ये एक मैकेनिज्म है, आप लोग सोच सकते हो, मतलब दिमाग में ये मैकेनिज्म सेट करना चाहिए कि कहां से हम लोग जो है मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो यही है बेस्ट स्ट्रेटेजी। एंड आपने आप बनाओ शॉर्ट नोट्स, बनाओ स्ट्रेटेजी आपने आपका, एंड दौड़ो अपने लक्ष्य में, एक गोल बनाओ। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से हियर, पर डे यू ऑब्वियसली मेक टू डू लिस्ट। देखो एक बड़ा सा चेंज ले आने के लिए छोटा छोटा चेंज इंप्रूवमेंट मतलब नीड है, ठीक है। तो देखो कोई एक टू डू लिस्ट बनाओ हर एक सुबह में, ठीक है। सपोज यू डू some questions of linear algebra, suppose you should do some questions of this, some lecture you have to attend some lecture, or you have to make some short notes, then you can definitely make a to do list for each day, ठीक। and try to
cover all the topics you write on that to do list. You try to cover, you must try to cover. देखो एक दिन होगा कि आप जो लिखोगे टू डू लिस्ट में वो कवर नहीं होगा, 2 दिन होगा कवर नहीं होगा, 3 दिन होगा कवर नहीं होगा, बट एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा जिस दिन आप लोग ये जो 4 या 5 टॉपिक यहाँ पे लिखोगे ना वो कवर हो जाएगा एंड वो एक हैबिट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हैबिचुअल मतलब हैबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हैबिट आप लोगों को यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो टू डू लिस्ट बनाओ per day and try to cover or try to read or try to solve the questions, or whether you write in this to do list, make your own strategy and own to do list and try to cover these topics, okay, each day. Then you will definitely see after 1 or 2 weeks that you can definitely cover the all topics, and after 1 or 2 weeks or 3 weeks you can definitely feel some improvements at your own. Okay, so this is I must say this is the sentences and bonus statements, you can say bonus sentences from my side, you can say. Okay, so obviously let's do it, let's crack it. Okay, and obviously जो लोग नए हो चैनल को, if you like the video then consider subscribing to my channel. Okay, thank you, मिलते हैं कोई एक दूसरा वीडियो में, and obviously आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा हुआ। ठीक है, thank you for watching, thank you.